I'm Dr. Kishor Kumar, Senior Resident, currently posted at Chittorgarh. Basically, I attended my first workshop on disaster management uh, done by Nimhans in Kota. So during this first phase in Kota, I learned how to manage things when we are in a disaster situation. But the training extended beyond that. We also learned how to take care of ourselves, how to be prepared better for disasters, how to strengthen before, during, and after a disaster situation. We learned a lot of things, and they were done in a very simple and innovative ways. We learned by doing. We did not learn like in a lecture form, but we learned everything through help of activities. We were able to better learn because we were doing everything. We were actively participating. We were learning because we were involved in it. We were engrossed in it. The program was designed such that we could understand the basics of disaster management. We could understand the basics of strengthening our own resources, our coping skills, and the coping skills of a community and the coping skills of our government institutions. So it was a very comprehensive program. We learned a lot of aspects of disaster management. For example, we learned how to do district analysis, HRV analysis, where hazard, risk, and vulnerability were checked for our own districts. And basically, we can also apply these techniques to any place, like a school or a hospital or any other community, or even our own living apartment. So we learned we should always be prepared. A disaster will not take place unless there is an exposure, there is a risk. So everything that we always thought earthquake is a disaster, tsunami is a disaster, those are actually hazard. If we have the capacity to control these disasters, if we have the capacity to take care of survivors during these disasters, if we have a capacity to reduce the damage done by these hazards, then we can definitely prevent a disaster, even if there are hazards and even if there are events which are catastrophic in nature. So that was the first lesson that we learned. Then we learned that there are some vulnerable populations during disasters. For example, women, for example, children, old age people, people with disabilities. We learned that we have to give extra care when we are dealing with these populations, whether they are women, whether they are children or disabled or aged people. We learned things that we have to take care during disasters. For example, confidentially, we have to maintain the dignity of the survivors, and a lot of things. We also learned that not only we are supposed to take care of that particular situation, but also we have to think about the future. We have to start focusing on their mental health. We have to start focusing on re-establishing their primary support system. We have to focus on secondary support system. We also have to, for example, like a survivor is in a camp and he has nothing to do. Then we need to provide them with opportunities for recreation as well. We would think that recreation is not so important in a situation where lives were lost. But जैसे कहते हैं कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है. तो उसी तरह से अगर एक सर्वाइवर है, वो एक ऑलरेडी एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहा है, लेकिन अगर हम उसको कुछ करने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो नेगेटिव इमोशंस है वो बढ़ जाएंगे. डिप्रेशन होने का रिस्क, सुसाइड आइडियाज आने का रिस्क वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसको कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज दे दें, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसको सिखा दें, तो बहुत बेटर होता है. चाहे वो फिर कोई बच्चों में टॉयज हो, चाहे वो बड़ों में और लोगों को ट्रेन करना और लोगों को एजुकेट करना, या रिबिल्डिंग प्रोसेस में हेल्प कराना हो, या फिर उनको कुछ खेलने के लिए ही मीडियम दे दिया जाए, या फिर जो उनको पसंद हो, कोई आर्ट हो, कोई लिखने के किसी को पसंद हो, वो सब भी कराया जा सकता है. उसके साथ साथ रिलैक्सेशन टेक्निक हम उनको सिखा सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक वगैरह, योगा, मेडिटेशन, ये सब हम उनको सिखा सकते हैं.
फिर हमने उसके बाद जाना कि जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं तो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि हमको खुद की भी केयर करनी है, हमें अपनी साइकोसोशल केयर भी करनी है, हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स हमने यूज़ किए बाकी और सर्वाइवर्स के लिए, वो प्रिंसिपल्स हम अपने ऊपर भी अप्लाई करें, अपनी कोपिंग स्किल्स को, अपनी कैपेसिटी को भी, पर्सनल कैपेसिटी को भी हम बढ़ाएं। तो ये सब चीज़ हमने सीखी, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किस तरह से हम अलग अलग स्किल्स का यूज़ करके हम जो है डिजास्टर सिचुएशन को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, वो सब हमने सीखा। तो ये मैंने कोटा में सब सीखा। फिर कोटा के बाद मुझे एज अ मास्टर ट्रेनर जयपुर में भेजा गया। तो अब मैं जयपुर में जब ट्रेनिंग करा रहा हूँ, क्योंकि जो कोटा में मैंने सीखा वो लर्निंग बाय डूइंग था, थ्रू एक्टिविटीज था, थ्रू इंटरेक्टिव सेशंस था, वो इतने अच्छे से मेरे अंदर इनवाइब हो सका, मैं इतने अच्छे से उनको सीख सका कि हाँ, जयपुर में ट्रेनिंग कराने में मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार ये ट्रेनिंग करा रहा हूँ, या मैं सिर्फ एक हफ्ता पहले ही तो मैंने कोटा में ट्रेनिंग ली थी। मुझे बहुत आसान रहा कि मैं जिस जयपुर की ट्रेनिंग में बहुत सारे सीनियर लोग थे जो मुझसे काफ़ी साल सीनियर्स थे, बट स्टिल उनके साथ मैं कंफर्टेबल रहा। उन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा, उन्होंने आगे बढ़कर जो एक्टिविटीज़ थी उसमें पार्टिसिपेट किया, हर जगह सपोर्ट किया, जो हम डिस्कशन करते थे उनमें सपोर्ट किया। तो इट वॉज एन ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस, बोथ एज अ ट्रेनी एंड एज अ ट्रेनर। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो प्रोग्राम है वो इतना इफेक्टिव है, इतना कॉम्प्रहेंसिव है, इतना वैल्यूएबल है कि अगर हम उसको अप्लाई करें, उसको आगे चलकर, और अब हम जैसे अब अपने हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मैं अपने और सबऑर्डिनेट्स को, अपने सीनियर्स को भी इनफैक्ट सिखा सकता हूँ, और ज़्यादा डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर ये सब हम सभी लोग जो इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सभी लोग हम जाकर और लोगों को ट्रेन करते हैं, तो हम एज राजस्थान और एज इंडिया वी विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर dealing with disasters, or rather we will be able to deal better with hazards, and we will be able to prevent or reduce the impact of disasters in future. So that's it. It was a very good program, and I think everyone should attend, even if they are not directly related to mental health. Still they should take part in such activities, and they should learn how we can take care of ourselves, we can take care of our survivors, victims during any disaster. Thank you.